Welcome to the 14th lecture of the course Introduction to Computer and Programming. In this lecture, I will show you the same menu-driven program that I have shown you in the lecture in which we did switch case statement. अब हम उस menu-driven program को function के साथ करेंगे. We call each separate function in cases. For example, हमारे पास फैक्टोरियल का फंक्शन होगा, हमारे पास प्राइम नंबर का फंक्शन होगा एंड इवन ऑड का फंक्शन होगा. एंड देन वी कम टू द फंक्शन कॉल बाय वैल्यू. कि फंक्शन को कॉल करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स टू दैट फंक्शन. उसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, सी का कोड देखेंगे एंड देन वी विल कम टू ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. दैट इज एक्चुअली द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम. Let's overview our previous lecture. In the previous lecture, I gave you the introduction to structured programming, then function definition, function call, function prototype. In today's lecture, I will show you a menu-driven program using function. So हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे, पूरा कोड इसको करेंगे, ठीक है. So function call by value. Then I will give you the introduction of this topic and then I will show you some example program और इसमें sequence बताऊंगा किस तरह से function call हो रहा है, किस तरह से values function को pass हो रही हैं. Function call by value means that you are passing some value when you are calling a function, or when the function is called some values are passed to that function. Then scope of variables, local and global. सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमने पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में. इसमें मेन्यू हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, टू फाइंड अ नंबर इनपुट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, टू फाइंड दैट द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड एंड देन एग्जिट. सो ये मेन्यू हमारे पास डिस्प्ले होगा एंड नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू राइट दिस प्रोग्राम बाय कॉलिंग थ्री फंक्शंस. द फर्स्ट फंक्शन इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर to calculate a factorial of a number. Second function is the prime function to calculate whether the number is prime or not, and third is the even odd function, and then exit. So तीन function हम इस program में बनाएंगे. Let's go and write the program. Okay. So first of all, I declare a variable num that maybe I will need in my program, and a variable I that is for the loop and choice. Then we have a while one loop. Now you are very much familiar with the while one loop. हम इसको हमेशा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. इसमें हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी सो दैट द प्रोग्राम ओनली एग्जिट जब यूज़र चाहेगा. व्हेन द यूज़र सेलेक्ट द ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोग्राम, तब प्रोग्राम एग्जिट होगा. प्रिंट एफ. ये जो मैंने कमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज जब बहुत सारा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारी ऐसी ब्रेसेस आ जाएंगी, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये क्लोजिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये किस की है, ये वाइल की है, ये मेन की है, या ये किसी स्विच की स्टेटमेंट की है. ठीक है. सो जैसे ही मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट वाइल की लिखी, आई पुट द कमेंट दैट दिस इज़ द वाइल क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है. सो दिस कमेंट इज़ फॉर मी, फॉर द प्रोग्रामर. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट. देन copy this thing. Let's see. Factorial. Second menu is prime. Third menu is even or odd, and the fourth is exit. Now we display the message
enter your choice. Then we have a scanf function to take input from the user. The first thing we are going to tell to scan a function is the type of the input, and in this scenario the type of the input is integer, and the memory associated with the integer, that is and choice. We have switch choice, then opening and closing bracket of switch, now case 1 break, and in case 1 we will call a function. अच्छा, एक चीज हमने पहले मेंशन की, function prototype. We have to write the prototype of the function over here first. ठीक है, so preprocessor के बाद you have to write the prototype of the all the function that you are going to use in your program. जितने भी आपके function use कर रहे हैं, कौन से function? There are two kinds of function in C language. I told you this in our last lecture. The first one is the library function, जो कि built-in function है C के. These are printf, scanf, system, जो function हम use कर रहे थे, ये built-in function है. And for those built-in function, there is no need to write prototype of a function. ठीक है, ये built-in function है, already C को मालूम है. So if you are, the other type of the function is user-defined function, जो कि आप खुद से define करने जा रहे हैं. So in this program we have 3 user-defined function. The name of the first function is factorial. इसको हम क्या information pass करेंगे? कोई information pass नहीं करेंगे. So if we are not passing any information or any value to that function when that function is called, we have to tell here void, that nothing is being passed to that function. And what this function return? Void. ये तमाम चीजें हमने last lecture में देखी थी. ठीक है, so the second user defined function is void. उसकी return type void होगी. The name of the function is prime, let's say, and again void. इस फंक्शन को, प्राइम फंक्शन को भी आप कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहे, और ये फंक्शन भी कोई इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न नहीं कर रहा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. देन द थर्ड फंक्शन even underscore odd. So even underscore odd, is that function name is okay for C syntax wise? Yes. Same rules is applied for the construction of a function name that we have read for the construction of a variable name. ठीक है, I hope you आपको ये तमाम rules याद होंगे. Now we have defined the prototype of the function. So let me write over here in a comment block function prototype. ठीक है, now we have a main menu, and then when जब case 1 user select करेगा, then we have to execute factorial function, and after the execution control will be back to the break statement. And in case 2 we will be executing prime function, then break statement, and in case 3 even underscore odd function will be executed, right? And then break statement. So how you call a function? This is a function call. This is also a function call. ठीक है, आप printf function को कॉल कर रहे हैं. printf एक built in function है, and you are calling a printf function. So इसका तरीका क्या है कि function के साथ ये parentheses आएंगी, opening and closing parenthesis and semicolon, and if you are passing some information to that function, you have to mention it over here. Since our user defined function
when we define the prototype of these function, when we write the prototype of these function, we tell that we are not passing any value to that function. So if we write void over here, we are not going to pass anything over here, so this would be empty and the function return no value. ठीक है, so function का नाम आ जाएगा opening parenthesis, closing parenthesis and semicolon. This is the mechanism to call a function. ठीक है, so let me write it over here as well and over here as well. So these are the function calls. ठीक है, and then we have case 4, and in case 4 we call the exit function. Should we have a default case? Yes, it's better to write a default case, because if the user input wrong value, some message should display. Input choice is wrong. Okay, so seems like this is our main function. Okay, so is the program is ready to run, isn't it? Do you think this program is ready to run now? Can I run it? No. Why? Because when the factorial function is called, we have to tell which instructions or which T statements should be executed when factorial function is called. Similarly, when prime function is called, तब कौन सी statements execute होंगी, कौन सी C statements execute होंगी. Similarly, when even odd function is called, which statements are going to be executed. We haven't tell this thing. How we can tell? We can tell this thing to C by writing the definition of this function. And before writing the definition, you have to first tell the return type of the function, then function name, and then the type of the parameter. These are void actually. So if you mention it over here, it's fine. Now let's write the logic of the to calculate the factorial of a number. We have a variable num, then we have a printf function, and we display the message enter a number to find a factorial. So we display this message, then scanf function, we take the input from the user %d, comma, and num. We need a variable, another variable, that is I for, and we need another variable to store the factorial value, right? So I is equal to num, we initialize f is equal to 1, I is greater than 1, I minus minus, what we did is f is equal to f multiplied by I. Okay, and then we have a printf statement, is equal to %d, comma, f. So this is the factorial function. ये वही कोड है जो कि मैंने लास्ट टाइम लिखा था. यही कोड मैंने यहाँ से यहाँ तक उस केस 1 के अंदर लिखा था. Now I make a function, factorial function. Similarly, I can write a function prime void integer x, then again we have printf statement enter a number, then scanf %d, comma, and x. Okay, so now we have
a variable I is equal to 2, so you have to declare I over here, while I is less than num divided by 2. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, you are checking if any number is dividing num, if num mod I is equal to 0. If it is, then what you do is you print the message using printf statement that number is not prime and break the execution of the loop. आप further इसको चेक नहीं करेंगे, कोई और नंबर तलाश नहीं करेंगे जो n को ब्रेक करते हैं, ठीक है. Then after the loop you have a if condition if I is equals to. now ये इस loop से कब बाहर आएगा? There are two possibilities कि ये loop break हो. कहाँ से? 2 points हैं. The first one is the condition when the condition become false, and second one is when that break statement is executed. So there are 2 exit point, या 2 ऐसे points हैं जहाँ से ये while loop break हो सकता है. So अगर ये loop इस point से break होगा तो इसका मतलब ये है it has find all or it has check all the numbers from I to num divided by 2 and no number divides num completely. और अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा इसका मतलब है हमारे पास ये if की कंडीशन ट्रू है, that's why it break from that statement. और जब इससे जब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लूप इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ब्रेक होगा, then that means that we have find a number that completely divides num. So अब हमने बाहर लूप से चेक करना है. जब लूप एग्जिट होगा, टर्मिनेट होगा, तो उसके बाद हम चेक करेंगे, बिकॉज आपने कब डिक्लेयर करना है नंबर इज प्राइम? व्हेन यू कंफर्म कि आपने आई से लेकर नम डिवाइडेड बाय 2 तक तमाम नंबर्स को चेक कर दिया है एंड यू हैवंट बी एबल टू फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स नम कंप्लीटली, राइट? सो दैट कंडीशन इज नम डिवाइडेड बाय 2 + 1, राइट? सो आई की वैल्यू जब नम डिवाइडेड बाय 2 + 1 होगी, we should increment the loop counter as well. So जब I की वैल्यू num divided by 2 + 1 होगी, so num divided by 2 + 1 is less than num divided by 2, condition become false, ठीक है? Less than or equal to. Then we print a message number is prime /n, ठीक है? So this is the function closing. Let me write here prime function closing. Similarly we can write over here factorial function closing. Then we have prime underscore odd function. इसकी पैरामीटर भी void हैं. It's very simple. Int, let's say x, print f, enter a number /n, forgot to put semicolon, then in scanf you take the input %d and in variable x, okay? Then you check if x2 completely divides x. If it is, then this means that x is a prime even number, and if it is not, then in else part we can write odd number, and that's it. This is our function prime underscore odd function closing. Okay,
Now our program is complete. We have 3 user defined function. We write the prototype of these functions. Prototype may we must write the return type of the function, the name of the function, and the type of the parameter. Since the return type of these 3 functions is void, so we write void, because no value is returned by any of these function, and we are not passing any value to these function, so that's why we write void over here as well. That means कि इसको आप कोई किसी टाइप की वैल्यू पास नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल इसको इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे थे, देन वी मस्ट राइट इंट ओवर हेयर और फ्लोट ओवर हेयर और करेक्टर ओवर हेयर. वी विल सी जब हम देखेंगे फंक्शन कॉल बाय वैल्यू टॉपिक. देन दिस इज आवर मेन फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन. It ends over here, and in this definition you can see we are calling factorial function, we are calling prime function, and we are calling even odd function. And this is the definition of the factorial function. Definition means कि जब वो function call होगा तो कौन कौन सी statements execute होंगी. Or you can say what does a calling of that function mean. इसको कॉल करने का मतलब क्या है? कॉल करने का मतलब ये है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. Then this is the definition of the prime number, and then this is the definition of the even odd. This should be even odd, not even prime, even odd. Let's compile this program and check if there is some error, and what it is saying. Num undeclared, so we are using a variable name without declaring it, so we have to declare it first. Num, okay, then okay, now it is perfectly fine. Let's run this program. So first option factorial, enter a number to find a factorial value. So जो 1 प्रेस हुआ वो केस 1 में आया, उसने फंक्शन factorial फंक्शन को कॉल किया. Now let's say that value is 4, so factorial is 24. Now again it display the menu. Let's say select the option 2, enter a number to check if it is prime. Let's say the number is 17. 17 number is not prime. There is something wrong with our logic. Then let's check out our logic first of the prime number. Okay, how come I start with 2? Okay, oh, we are using different variable over here and over here, so let me write num over here. So there's no need for the x, then maybe. Okay, let's compile and execute this program. Option number 2, prime number, again I input 17 and says the number is prime, right? So option 3rd, to check even or odd number, the number is 13, it says even number. So let's see what's wrong with our logic. So that is some problem. Okay, we forgot to put and sign over here. This is and x. Now let's run. 3rd option, number is 13, it says odd number. Okay, 4th option, exit from the program. Now you can see कि हमने अपने इस मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, and on the top we have a main function, and below the main function we have 3 functions. These are factorial, prime and even or odd. ठीक है, even underscore odd. ये 3 फंक्शन है हमारे पास मेन फंक्शन से नीचे. That means कि मेन फंक्शन are calling these functions according to the user choice. Now passing values between function. The mechanism used to convey information to the function is the argument or the parameter. You remember our bake cake function in 3rd lecture or 4th lecture. उस bake cake function में क्या था? Bake cake function क्या करता है? It bakes the cake. Okay, so is there anything you provide to that function? Yes, all the ingredients of the cake, egg, oil, baking powder, flour. So all these ingredients you are going to provide to that function,
and what that function do, it mix up all the ingredients, and as an output you get a baked cake. So passing values between function is the same. You pass some information to the function. So if I am calling the bake cake function, I have to pass these ingredient to that function so that it can bake the cake successfully. Okay? And these ingredients are actually in C language called arguments or parameter. So ये जो ingredients provide कर रहे हैं आप इस bake cake function को, C language में इसको argument कहते हैं या इनको parameters कहते हैं. So you have already used the arguments in the function. You remember scanf, printf function में the format string, you have a format string that display the message output message वो display करती है on the screen. That is the input value you are providing to the printf function. और वो input value क्या है कि please display this message. जो मैसेज आपने डबल कोट्स में दिया printf function को, display that message on the screen. And scanf function, you first tell the type of the input, किस टाइप की इनपुट आप यूजर से लेने जा रहे हैं. Then the second parameter is the memory that is associated with that variable where you want to store that input value. So the format string and the list of variables used inside the parentheses in these functions are the arguments. ठीक है? So let's see the example program. इसको हम रन करके भी देखेंगे, but let's first dry run that program. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि whenever the C program executes, it calls the main function, and every C instruction in the main function is executed step by step. So पहले एक instruction execute होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, and so on. ठीक है? So the first instruction in the main is the declaration. That is a declaration statement where you are going to declare 1, 2, 3 and 4 variables, and the type of these variable is int. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि integer variable को जो memory associate होगी, that is 4 byte. Again, 4 byte will be associated for every integer variable that is declared in the program. उसको 4 byte memory के associate कर दी जाएंगी. That means उसको उस variable को जो memory मिलेगी to store the value of that variable, that is 4 byte memory. ठीक है? So इसका मतलब है कि आपने 4 variables declare किए and 4 variables को 4 byte allocate होगी memory separate. That means total 16 bytes allocate हुए. A variable को 4 byte, similarly B variables is associated with 4 byte, C variable has 4 byte, and some variable is also associated with 4 bytes. The next instruction executed is printf. Now with this printf, आपको पता है कि this is for displaying some message on the computer screen, so in the output you get a message, enter any 3 number. So ये जो मैं आपको ड्राई रन करके बता रहा हूँ, ये मैं एग्जीक्यूशन का बता रहा हूँ कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, so internally memory की पोजीशन क्या होगी, that is shown by here in this variable, और actually output क्या आ रही है, that is shown over here. Right? So we are executing each instruction step by step. ठीक है? हम एक instruction को एक टाइम पे execute कर रहे हैं. And then the next is the scanf function. That means you have to provide input. ठीक है? और आप कितनी input provide करेंगे? 3 inputs. ठीक है? This is, let's say, first input, second input is 6, and the third input is 2. So 3 inputs आपने provide कर दी. अब ये तीनों inputs they will be stored in variable A. देखिए, first टाइप की जो वैल्यू है वो A में स्टोर होगी, सेकेंड टाइप की जो वैल्यू है वो B में, और थर्ड जो है वैल्यू दैट विल बी स्टोर इन वेरिएबल C. सो इन तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो गई है जो मेमोरी में वेरिएबल्स हैं ये. ठीक है? जिनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हुई हुई है. A वेरिएबल को 4 बाइट है, B वेरिएबल को 4 बाइट एलोकेट हुई है, C वेरिएबल को भी 4 बाइट स्पेस एलोकेट हुई है, सम वेरिएबल को भी 4 बाइट स्पेस एलोकेट हुई है. व्हाट डज दैट मीन कि 4 बाइट स्पेस एलोकेट हुई है? स्पेस एलोकेशन का मतलब ये है कि व्हेन वी असाइन एनी वैल्यूज टू दोज वेरिएबल, द वैल्यू नीड्स टू स्टोर समवेयर so that you can use it further in your program. So where it is going to be stored, it is stored in the memory that is associated with that variable. So इसीलिए हर variable जब भी declare किया जाता है उसके साथ कोई ना कोई memory को associate कर दिया जाता है. Depending upon the type of the variable,
अगर वेरिएबल की टाइप इंटीजर है तो 4 बाइट्स विल बी एलोकेटेड, इफ इट इज फ्लोट अगेन 4 बाइट विल बी एलोकेटेड, एंड इफ द टाइप इज कैरेक्टर देन ओनली 1 बाइट विल बी एलोकेटेड. Then we have a function call, rather I can say that these are the compound statement. We have a function call and we have assignment statement here as well. ठीक है, so function एक call हो रहा है, cal sum एक function call हो रहा है. ठीक है, this is a function call and you are passing 3 values a, b and c to that function. आप एक्चुअली वेरिएबल a पास नहीं कर रहे, b पास नहीं कर रहे, c पास नहीं कर रहे, बट यू आर पासिंग द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स, that is 5 instead of a and 6 instead of b and 2 instead of c. So you are passing these values 5, 6 and 2 to the function cal sum. Again आपको दोबारा बताता जा रहा हूँ कि this is a compound statement. इसमें the first thing that is executed is the function call, and when that function returns some value, then the assignment statement will be executed, means that return value by the cal sum function will be assigned to the sum variable. ठीक है, so जब ये function call होगा, what will happen, this function execute first, then the control comes to that function, definition of the function. अब main function इस point पर wait कर रहा है, किसका, जब ये cal function completely execute होके वापस नहीं आ जाता, it will wait over here. ठीक है, so control is transfer over here and it execute cal sum function. So इसने देखा यहाँ पे 3 variables declare हो रहे हैं. कौन से 3 variables? x, y and z. So these are 3 variables of cal sum function. So memory is allocated for x, y and z. So ये 3 variables यहाँ पे क्यों रखे हैं? Why 3 variables? Because the function को जो हम value पास करेंगे, they are 3 values. फंक्शन को हम 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं. देखिए कॉल टाइम पे कितनी वैल्यू पास हो रही है, 1 2 3. सो डिफाइन जब करेंगे तो तब भी हम इधर इंटीजर रखेंगे. वाई? बिकॉज वो जो वैल्यू पास हो रही हैं दे नीड टू बी स्टोर एट सम प्लेस. ठीक है, सो वेरिएबल ए की जो वैल्यू है दैट विल बी स्टोर असाइन टू वेरिएबल एक्स ऑफ कैल सम फंक्शन, वेरिएबल बी की वैल्यू y को साइन हो जाएगी और वेरिएबल c की वैल्यू z को साइन हो जाएगी. दैट मीन्स जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वेरिएबल x, y और z को, वहां पर ये 3 वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे. कॉल टाइम पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी असाइन टू द फर्स्ट वेरिएबल जहां पर आपने फंक्शन डिफाइन किया होगा. सो फंक्शन जब डिफाइन किया फर्स्ट वेरिएबल जहां पर कौन सा x है, सो a की वैल्यू विल बी असाइन टू x. इफ यू राइट x ओवर हियर एंड z ओवर हियर देन द वैल्यू ऑफ a विल बी असाइन टू z एक्चुअली. ठीक है, सो वैल्यूज असाइन हो गई हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन डिक्लेरेशन दैट यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल d. सो मेमोरी विल बी एलोकेटेड फॉर दैट वेरिएबल, एंड देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. Now here this is also a compound statement. You have to first solve these operations, and when you get a single value then that single value will be assigned to d. So हमारे पास x plus y plus z, so 5 plus 6 11 plus 2 13 result will be stored in a variable d. So variable d में result 13 store हो जाएगा. And then there is a return statement, return d. That means you are going to return the value of d of variable d. variable d की वैल्यू क्या है? 13. so आप 13 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. किस पॉइंट पर रिटर्न कर रहे हैं? उस पॉइंट पर रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम वेयर यू कॉल cal some function. Again return 13 mean you are going to return the control and the value of d, value of that variable at the point from where the cal sum function is called. सो वो पॉइंट ये है हमारे पास. तो यहाँ पर 13 आ जाएगा. दैट मीन्स इंटरनली इट बिकम एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज सम इज इक्वल टू 13, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया. नाउ द वैल्यू 13 कम्स ओवर हेयर. जो भी वैल्यू उस फंक्शन ने रिटर्न की थी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. इस पर्टिकुलर केस में उसने 13 रिटर्न किया था तो 13 विल कम ओवर हेयर. सो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं दैट इज हैपनिंग इनसाइड, दैट इज इनविजिबल टू यू, बट it is good if you understand all those concepts. ठीक है, ये किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है. then it become assignment statement, simply assignment statement. so value 13 will be assigned to a variable sum. so sum के लिए जो memory associate होती थी वहां पर value 13 store हो जाएगी. and the next statement is again the printf statement. that means you are going to print the value
of sum, that is sum is equal to 13, and next statement is again a system pause, so you see the message, press any key to continue on the screen then. Okay? So this is the dry run of the program. Let's go to the program and run it actually. So this is our program. So what happen if I won't call the function? अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तब क्या होगा, तब फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके पास रिजल्ट सही नहीं आएंगे. सो लेट्स सी, अभी मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को. लेट मी कंपाइल दैट प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट. एंटर एनी 3 नंबर, लेट्स से 4, 5 and 2. So sum is 11. 4 and 5, 9 plus 2 is 11. And let's say if I won't call that function, then 4, 5 and 2. Now sum is 70. जिसका मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और ये जो वेरिएबल सम है, इसको जो 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हुई थी, that allocated memory contains some previously written value. कोई भी garbage value पड़ी, that is a garbage value for that program, right? So that value is printed over here in that printf function. Okay, let's go back to the slide. Now points to remember. The variables a, b, c are the actual parameters, actual arguments, whereas the variable x, y and z are called formal arguments or formal parameters. So any number of arguments can be passed to a function being called. आपके पास ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसको आप let's say 10 arguments पास कर रहे हैं, 10 parameters पास कर रहे हैं, 100 parameters पास कर रहे हैं. However, the type and the order and the number of actual and the formal parameters must always be same. जब फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, जो वैल्यूज आप पास कर रहे हैं, अगर फंक्शन 5 वैल्यू इनपुट ले रहा है, लेट्स से फर्स्ट 3 फ्लोट हैं, देन बाकी 2 इंटीजर हैं, तो जब कॉल करेंगे तब भी आपको फर्स्ट 3 फ्लोट और बाकी 2 इंटीजर पास करने होंगे. और जब आप डिफाइन करेंगे फंक्शन को, तब भी फर्स्ट 3 पैरामीटर फ्लोट होंगे और सेकंड बाकी 2 इंटीजर होंगे. The return statement serve 2 purposes. On executing the return statement, it immediately transfers the control back to the calling program. ठीक है? And it returns the value present in the parentheses after return to the calling program. So return statement क्या काम करती है? It returns the control, execution control, and it also returns the value that is mentioned after the return statement. ठीक है? वो value उस point पे return करती है where you have called that function. There is no restriction on the number of return statement that may be present in a function. एक फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी आ सकती हैं. कैसे आ सकती हैं? You can see the example. We have a function fun that takes one value as a parameter. So we are checking this value. If that value is less than 10, then return 1. If that value else, return 0. So you can see clearly in this program that at single time or at a time, only one return statement will be executed. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाए और उसी वक्त ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाए, बिकॉज यू पुट इट इन अ वे कि या तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर जब ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. और अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन इसका मतलब है कि रिटर्न 0 सेकंड रिटर्न स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो यू कैन हैव एज मेनी रिटर्न स्टेटमेंट as you can or as you wish, but at a time only a single return statement will be executed. Now the return value should be accepted in the calling function. So there are two kind of functions. The main function is the calling function and the other function is the called function, जिसको हम call कर रहे हैं, that is called function. So calsum is a called function and main is the calling function that is calling calsum function. ठीक है? So the return value should be accepted in the calling function. So calling function के अंदर हमारे पास इस तरह से statement होनी चाहिए. If I don't put sum is equal to
दिस साइन, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू, अगर मैं ये यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ एंड आई जस्ट राइट cal sum ABC, it works perfectly fine, but the value returned by the cal sum will not be assigned or will not be saved in the main function. आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, so that value is not saved, you are not going to cache that value. So in this way you are going to cache that value actually. ठीक है, आप उस वैल्यू को एक्चुअली कैच कर रहे हैं. कैच का मतलब यह है कि आप उस वैल्यू को सेव कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, जो वैल्यू cal sum ने रिटर्न की थी. क्यों सेव कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर? बिकॉज मे बी फर्दर यू नीड दैट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल इन अवर program we need that value because we want to display it on the screen. ठीक है. Now if called function should not return any value, then it must be mentioned by using keyword void. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, then you must write void. ठीक है, आप उसमें void लिखें लाजमी. उसकी प्रोटोटाइप लिखते हुए void लिखेंगे, उसको डिफाइन करते हुए void लिखेंगे, उसको कॉल करते वक्त void लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कॉल इट बाय द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर्स इफ देयर आर एनी. ठीक है, सो यहाँ पर भी कोई पैरामीटर्स ले रहा, यू कैन राइट void ओवर हेयर एज वेल. ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन डिस्प्ले जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है. एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट में फिर लेटर सी लिखा आएगा, बट दिस फंक्शन वोंट टेक एज एनी वैल्यू इनपुट टू दैट फंक्शन एंड वोंट प्रोवाइड एनी रिटर्न वैल्यू. ठीक है, a function can return only one value at a time, thus the following statement is invalid. So it is not possible that you can return more than one value using a single return statement. So like for example, it's perfectly fine if you write return 13 or return D. That means D is a variable and whose values you are going to return, but this is invalid if you write return A comma B. That means you are going to return two values or returning x comma 12. So value of variable x and 12 will be returned. So that is not possible, or that is not allowed, or that is a syntax error in C language. Now if the value of the formal argument is changed in the called function, the corresponding change does not take place in the calling function. Now the value, let me repeat it again. If the value of the formal argument is changed in the called function, the corresponding change does not appear to be taking place in the calling function. कि आपके पास main में एक variable है x and you are passing that variable, and actually you are passing the value of that variable to the calling function, to the called function. ठीक है, so आप cal sum को abc पास कर रहे हैं और abc वेरिएबल्स की वैल्यू है मेन फंक्शन के अंदर, एंड इफ cal sum इज गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स, दोज वैल्यूज को, उन वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करता है cal sum, तो दैट चेंज वोंट अपीयर इन द मेन फंक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ वेरिएबल a and we are calling a function then fun a, funka. जब fun a कॉल करेंगे, now what does that mean? Will the variable a will be passed to that function? No, not the variable a, but the value of a will be passed. ठीक है, so a की वैल्यू पास हो जाएगी और a की वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? This is the variable a, this is the variable b. वो वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी. एक वेरिएबल b है that contains the value of a first and then it assigns 60 to b. वो b को 60 असाइन कर देगा, then 60 will be returned at the memory that is associated with the variable b. It has nothing to do with the variable or with the memory that is associated with the variable a. ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे if I have one page of notes, ठीक है, और मैं वो नोट आपको फोटोकॉपी करके दे दूं, that means I give that note by value to you. मैंने उसकी कॉपी बनाई है and I gave you a separate copy. Now you have your own copy of that notes and I have my own, and if you are going to change that copy and if you write anything on it that changes or that writing doesn't appear on my copy, ठीक है, मेरे पास appear नहीं होंगे. Similarly, a variable belongs to the main function, that is a variable in main function,
इस चीज़ की हम डिटेल थोड़ी सी बात देखेंगे जब हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल पढ़ेंगे. सो a belongs to main function. So if you are passing a value of a to function fun, so that value a will be copied to a local variable, to a variable that of fun function. So fun function का जो variable है integer b, उसको ये value assign हो जाएगी. And if you are writing b is equal to 60, so only the change will be appear at the memory that is associated with variable b. It has nothing to do with a. Now if when the control goes back to the main function, it execute printf function, and what will be printed? 60? No, 30 will be printed. Why 30 will be printed? Because the change done by fun function is appear in its own variable. उसके अपने वेरिएबल में चेंज आई है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ए वेरिएबल. ठीक है. So that is the whole statement. If the value of the formal argument is changed in the called function, कि आप इस formal argument है, इसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, the corresponding change does not take place in the calling function. So this is the calling function. Main is the calling function. This is a called function. If you are going to change the value of the parameters जो आप value pass कर रहे हैं called function में change करते हैं like this, that change doesn't appear in the calling function. ठीक है. Now let's write the menu driven program using function call by value. So हमारे पास same program है. अब हम उसमें by value उसमें कोई value pass करेंगे. ठीक है. Let's go and write the program. Remember the same program. Now let's change. We are passing some information to that function, and that value is, the type of that value is int. We are not going to write value over here. We are not going to write variable name in the prototype. We just mention the type, return type, function name, and the type of the parameter. So type is int. Here type is int, and type is int. ठीक है. So अब ये जो process है, that process enter a number. Let me copy from here and write it over here. Control V. So first you input a choice. आपने choice input ले ली. Choice input के बाद you said enter a number. कोई number input करें. वो नंबर इनपुट क्या करें, क्यों करें? बिकॉज उसका या तो फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, प्राइम फाइंड करना होगा, या इवन ऑड फाइंड करना होगा. वो पहले यूजर ने चॉइस में इनपुट कर दिए क्या फाइंड करना है. देन यू टेक इनपुट द नंबर एंड देन यू पास दैट नंबर ओवर हियर. सो आपने नम यहाँ पर पास कर दिया. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर पासिंग टू दैट फंक्शन? दैट इज द वैल्यू ऑफ नम. और वैल्यू ऑफ नम की टाइप क्या है? इंटीजर है. सो जो फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पर, वी मस्ट हैव अ इंटीजर वेरिएबल ओवर हेयर. ठीक है. लेट्स से दैट इज नम, एंड लेट्स से दैट इज वेरिएबल x and variable x. So we have to declare another variable comma x. ठीक है. So आपने नंबर इनपुट ले लिया x वेरिएबल में, then you call the function factorial x. So here you have int num is a variable of factorial function. Now अब यहाँ पर हमें input लेने की ज़रूरत नहीं है. Let me comment out this thing, or let me remove this thing. So comment out is the better option. Let's comment out. So अब जो value आ रही है वो function को यहाँ पे pass हो रही है. That will come over here. It will calculate the factorial. Similarly, the value pass over here num. There's no need to take input. Control Z. Let me comment out. And the prime function will be called from here. X will be passed to it. Even odd को भी आप x की value pass कर रहे हैं. ठीक है. Num calculate हो जाएगा and int num. So let me comment out this thing, and now let's change that value num. Okay, seems like it perfect. It works. It should work fine. Num redeclare as different kind of symbol. Okay,
Okay. Now let's run that program. First compile it. There is an error. Compile it again. There's no error. Why this is an error? Because you declare num over here. So this variable is of prime function. So a function cannot have a variable or we can say a function cannot have two variable with same name. So यहाँ पर आपने num एक दफ़ा declare कर लिया, you cannot declare num again. So that's why it gives me an error here. Num redeclared as different kind of symbol. So you should remove this. Now compile it. There's no error warning and run it. Now first factorial of a number, enter number. The number is let's say 5. So you pass that number to the function. So जो 5 number है that will be pass. यहाँ पर आपने input लिया, उसके बाद choice आपने पहले input कर दी थी कि आपने factorial calculate करना है, that is 1. Now the function call is factorial 5, value of x, that is 5. ठीक है. Now that value will be assigned to the variable num. So num में value assigned होगी, num की value 5 हो गई है, and now you calculate the factorial. ठीक है. Same is the case with the prime number. Let me show you. So 2. Now the prime number is 1, 2, 3. That is not a prime number. 1, 2, 9. That is also not a prime number. Let's say 79. Enter your choice. So your choice input is wrong. Okay, choice number 2 prime number, and let's say 19. Number is prime. Okay, let's check even odd. 16. So the number is even number. Okay, so let's exit that program. And exits, right? So you see we अब हमने same program बनाया है, but उसमें हम value information pass कर रहे हैं. We are calling the function by passing it some value. So what is the actual benefit? You see आप तीनों function में you have a printf, scanf, printf, scanf, printf, scanf. That means 3 printf and 3 scanfs. Now we comment out these printf, scanfs, and now we have only one printf, scanf, that is before the switch. ठीक है, and then we are passing that number to the function जो execute होगा. ठीक है. Now variable scope. Variable scope identifies and determine the lifespan of any variable in any programming language. कि उस variable का कितना lifespan है. Life मतलब क्या? How variable get lives. जब variable को एक memory allocate होती है, ठीक है, उसको कोई वैल्यू साइन अप कर सकते हैं, उससे वैल्यू आप हटा सकते हैं, उसको उस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट वेरिएबल इज़ अ लाइव वेरिएबल, उसको कोई मेमोरी एसोसिएटेड है. व्हेन अ वेरिएबल लूजेस इट्स स्कोप, इट मीन्स दैट इट्स डाटा इज लॉस्ट. ठीक है. So common type of variable scope in C is a local variable and a global variable. Let's see the local variable. You have unknowingly being using local variables. आप calsum function call कर रहे थे. calsum function में we have A, B and C and D variables. 3 variables calsum function में थे. main function हमारा है, उसमें 3 variables थे, X, Y, Z and sum, 4 variables. ठीक है. So X, Y, Z and sum are the local variables. So scope of variables A, B and C and sum. So उसका scope is limited from this point here and up to this point. So what does that mean? Scope is limited to from this point to this point. This means that within these boundaries, these variables A, B, C and sum can be used. Outside these boundaries, these variable cannot be accessible. A variable that is in the sum function is not accessible out of these boundaries. इस boundary के बाहर accessible नहीं है. That means that this is the scope of the variable A. Similarly, scope of variable B and similarly scope of variable C and sum. Now in calsum function, the scope of variable X, Y and Z and D.
Now you cannot access these variable x, y, z and d outside the function. आप return statement में just सिर्फ और सिर्फ d function की value भेज रहे हैं. You are not passing d variable actually. ठीक है, d की just value जाएगी, that is 13. ठीक है, so a, b, c or some variable are not accessible in CalSum. For example, in CalSum I cannot write print a is equal to, or I cannot write in CalSum function sum is equal to a plus b plus c, because a, b, c and some variable are declared inside the main function, so its scope is limited to the main function. कि main function जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इन variables का scope वहीं से शुरू हो रहा है और वहाँ पर ख़त्म हो रहा है. And scope शुरू होने और का मतलब ये है कि these variables are only accessible from this boundary. Accessible means that you can change the value of these variables or you can assign new values to that variables. Right? So let's go to the program and let me show you something new. So a, b, c and sum are the local variable of main function, x, y, z and d are the local variable of CalSum function. So what if we have a over here, b over here and let's say that is c over here. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है sum a, sorry, b and c and return sum. What happened then? Is it allowable? Yes, this is allowable. By definition of the local variable, this is a local variable. A, b, c and sum are the local variable of main function. ये main function के local variable है, इनकी visibility outside the main function नहीं है. ठीक है, so similarly CalSum के जो local variable है, that is a, b and c and sum variable. That means कि इन तीनों variables, इन चारों variables का जो scope है, that is limited to cal function. So this variable, अगर इसको आपको कोई value assign करेंगे, that will not affect the value of this variable. इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. Now this small a is a local variable of main function and this small a is a local variable of CalSum function. Similar is the case with the b, c and sum variable. ठीक है, so you can have a function that have the local variable with the same name. Now global variables. Locally scoped variable can be reused in other function without harming another content. I have shown you this example कि हमारे पास local variables थे main function के अंदर and we have a local variables in the CalSum function and the name of these variable are the same, so they are not affecting the values of each other. Local variable a in main function has different value and local variable in CalSum, if you assign a different value to that function, it will not influence the value of a variable a of the main function. ठीक है, because वो आपने main function के अंदर लिखा है और दूसरा variables a जो है that you have written inside the CalSum function. You might want to share data between function. So global variables की बात हो रही थी. So locally scoped variable can be reused in other function without harming one another. Perfectly fine. You might want to share data between functions. Okay, one of the mechanism is the global function. Okay. To support the concept of sharing data, you can create and use global variables. Now let's see the example of global variable. So global variable की example इस तरह से ही है. Let's say we have a notebook, right, and that is accessible by all the person in the room. Let's say 5 person are in the room and that is accessible for all the 5 person in the room, and that diary and that register is placed at the common place. ठीक है, common place or common table में पड़ा हुआ है register. So if a person A come over there and write something on the register, do you think that any other person B, C,
D or E can read that information? Yes. Any other person who come to the same desk, because that desk is public and that register is also public, so anybody can come to that register and read the message written by A. He can write a new message as well, ठीक है, या वो उस मैसेज को as it is रहने दे सकता है. Local variable के केस में क्या है? We have each of these person has their own copy of the register. So if they are writing anything on the register, it's written on their own copy of the register. It doesn't affect any other register. Okay? So let's see the example program of the global variables. Now we have a function print lucky number whose return type is void, and we have a variable int I lucky number. Now that I lucky number variable is declared outside the main function. This is a new thing, and that is actually a global variable. Right? So then we have a main function. और main function में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस variable में value input ले रहे हैं user से. And then we are calling print lucky number function. और print lucky number function क्या कर रहा है? It is printing the value of I lucky. That means we have changed the value of I lucky in the main function and we are displaying it in some other function. So this is the I lucky number. ये वेरिएबल है, आई लकी नंबर वेरिएबल है, उसको 4 बाइट्स एलोकेट हुए हैं बिकॉज उसकी टाइप इंटीजर है. दिस इज अवर मेन फंक्शन एंड वी हैव अ प्रिंट लकी नंबर फंक्शन. नाउ फ्रॉम द मेन फंक्शन यू कैन एक्सेस दैट वेरिएबल, यू कैन चेंज द वैल्यू, यू कैन रीड द वैल्यू, एंड सिमिलरली फ्रॉम द प्रिंट लकी नंबर यू कैन रीड दैट वैल्यू और यू कैन मॉडिफाई दैट वैल्यू. ठीक है, दोनों फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं इसको. लेट्स गो एंड राइट द प्रोग्राम. So you can see you haven't declared this variable inside any function. ये किसी function के अंदर declare नहीं है. This is declared before the main function. ठीक है? So that means this is a global variable. If it is inside over here, अगर वो यहाँ पर होता, for example, if I let's say copy it and paste it over here, and let me comment out this global variable. Now let's see what error we are getting. Now the error is here in the print lucky number, and the error is I lucky undeclared. I lucky number undeclared, because this is undeclared. You haven't declared it. What are the what are the position, or where you can declare that variable? You can declare it over here, or you can declare it before the main function, like here. ठीक है? Since it is not declared over here and it is not declared over here, so where you declare it inside the main function. So that means I lucky number is now उसका जो scope है, that is limited to that function only. वो इस function के अंदर से ही access किया जा सकता है, इस function के अंदर से ही उसको read या modify किया जा सकता है. You cannot read that variable now from any other function. ठीक है? So let me comment out this thing and let me uncomment it. Let's compile it and run that program. Enter your lucky number, let's say 12. It prints the number and disappears. So let me write system pause. Okay, now enter lucky number, let's say I write 12. So your lucky number is 12. You see the difference? The global variable is accessible by every function in the program, while the local variable are only accessible within the function in which they are declared. Please remember this difference. ठीक है? और global variable को declare करने का तरीका ये है, you have to write that variable the same way. You declare the variable inside the function, you have to declare it outside the function, that is before the main function. Right? Now we comes to the calling convention of the function. Calling convention indicates the order in which the arguments are passed to the function when a function is encountered, or when a function call is encountered. जब भी function call होता है, you are passing one parameter or more than one parameters. If the one parameter is passed, then calling convention doesn't matter. And if more than one parameters are passed, then which calling convention is followed? So there are two possibilities. Arguments might be passed from left to right, or argument might be passed from right to left.
ठीक है. For example, C language follows the second order. Consider the following function. Now this is a function you are passing A, B, C, D, 4 arguments or 4 parameter to that function. किस कॉलिंग कन्वेंशन से फॉलो होंगे? सी कॉलिंग कन्वेंशन क्या है? सी कॉलिंग कन्वेंशन ये है, द आर्गुमेंट आर पास might be passed from right to left. So right to left. So right, this is the right side. So first value of D will be assigned to the 4th variable in the definition of fun function. Then third value will be assigned to the 3rd variable, second value will be assigned to the 2nd variable, and first value will be assigned to the 1st variable that are in the definition of fun function. So इसमें अगर calling convention देखा जाए, if it is from left to right or right to left, it doesn't make any difference. ठीक है, but एक चीज़ याद रखनी है, in C language follows the second order. That means the arguments are in the C function are passed from left to right. ठीक है. Now let's see another statement. In some function call, the order of the passing argument becomes an important thing. Let's say this function call. This is a printf function call. So the number of arguments are, this is the first argument, the formatted output, comma, second argument A, comma, plus plus A, third argument, comma, A plus plus is the 4th argument. So what is the output of this program? If you compile it and execute it, what is the output? It seems like that the output is 1, 2 and 3. Because first the value of A will be printed, the value of A is 1, so 1 will be printed, then plus plus A. So plus plus A means you have to first increment the value of A, right, and then you have to display it on the output. So plus plus A means कि पहले आप A की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे and then उसके बाद डिस्प्ले करेंगे, because this is pre-increment, right? So the value of A, previous value of A is 1, so जब plus plus करेंगे इसको, the value become 2 and 2 will be printed, right? And then A plus plus. मुझे ये लग रहा है कि ये 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 2 ही आना चाहिए. A plus plus mean first you have to print the value of A and then increment it. ठीक है, because now A plus plus is the post increment statement. First the other operation is performed and then the increment part, and here the other operation is printing the value of A. So first value of A will be printed, value of A is 2, so 2 will come over here. So this is not actually 3, this is actually 2, and then the value of A is incremented. So the answer is 1, 2 and 2. This is not actually 3, this is 2. It appears like that is the answer, but actually this is not the answer. The output is 331, because you remember in C the function, the argument of the function will be passed from right to left. So right to left means that this is the right side. First this argument will be passed, that means this argument will be executed. So अगर ये कोई expression है, then that expression will be solved. This is actually an expression. ठीक है, और ये expression क्या है? A plus plus. This means that यहाँ पर सबसे पहले आप, because this is post increment, you have to first display the value of A. So 1 will be displayed, and then the value of A is incremented. Now the value of A become 2. ठीक है, then right side say this is the first parameter, this is the second parameter. Now in the second parameter we have a pre-increment statement, plus plus A. That means first it increments the value of A. So value of A जब increment होगी तो हमारे पास previous value क्या थी? 2, not 1, because first argument जब value 1 थी, it print that value and increment A, the value become 2, and now it is pre-increment. First it increment and then print. So जब increment होगी value तो it becomes 3 and then print. So 3 will be printed, and then you are printing value of A, that is also 3. So 3 will be printed over here as well. ठीक है, so calling convention C में जो follow होती है, that is from right to left. Let me summarize our today's lecture.
In today's lecture, I have shown you the same manual driven program using the function. First we write that program using the simple function, that is we are not passing any value to those function and not returning any value, and then we have written the program in which we are passing some value to that function. Same function, कौन से factorial function, prime function and even underscore odd function. We are passing it one integer value, and factorial function calculate the factorial of that number, prime function check whether that number is prime or not, and even odd also check whether that number is even or odd, and it displays the message. So there is no return value from that function. Okay? Then we have seen what is a global variable and what are the local variables, and calling convention. And C follows right to left calling convention of the function, that the argument of the function will be passed from right to left when the function is called. That's it for the today's lecture. Allah Hafiz.